Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. My dear brothers and sisters, I extend my warmest welcome to each and everyone to Ramadan Online Summit 2020. One community, one tomorrow. A vision towards a connected community. Hosted by Aspire College of Excellence and the Cognate in association with the United Foundation and Islamic Information Center. A short note on Aspire. Aspire College is one of its kind where it focuses on imparting the authentic knowledge of Islam to students under the guidance of well-qualified scholars. Aspire stands for integrity and unity of the Muslim Ummah according to the Quran and the Sunnah. It is founded by Sheikh Abdul Salam Madani, who has a vision to produce a generation which is well versed in Islamic studies as well as aware of the modern requirement of the Muslim Ummah. The courses offered by Aspire are BA and MA degree in Islamic studies and for +2 or PUC. The admissions of the academic year 2020 have already begun. You can apply it online. Soon, inshallah, we'll be launching our online e-learning portal as well. So these are a few testimonials from our students, where one of them says, I joined this course to learn about Islam, but not only did I learn about Allah's deen, but I also learned how to lead a life in this dunya, alhamdulillah. And one of them says, I would say that Aspire College is one of the best college you will find out there, and many more such. And this is the pic of a classroom where students are being taught by the Sheikh. And then Aspire also focuses on curricular activities along with studies, such as excursions and competitions of Quran recitation, allocation, and paintings, etc. Now, these are the pics clicked when students had visited Salam Trust, which is a center for children with special needs. They spent a quality time here and they go here often. So our hosting partner is thecognate.com, which is a digital news platform of Indian Muslims, which includes content such as news, ideas, culture, and business. The Cognate reports and writes on a wide range of issues and events concerning the Muslim community in India. The world where Muslims are dividing and fighting each other over trivial issues, we aim to unite the Ummah for a better tomorrow. Ramadan Online Summit 2020, one community, one tomorrow. Speaking of our today's speaker, most of the people who reside in Bangalore already know him, Dr. Taha Mateen, who is a medical doctor by profession and a renowned intellectual personality of Bangalore. He is the president of Medical Service Society of India. He is also a guide and mentor to numerous charitable and social projects in the city. He has been a speaker at many events, delivering mesmerizing lectures. I extend my warm welcome to you, sir. By this, I would like to conclude. Over to you, sir. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear brothers and sisters, I hope we are ready to start. The topic given today is youth in times of crisis. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا
في الآخرة إلا قليل. صدق الله المولانا العظيم. My dear brothers and sisters and youth, in these lockdown times and in these time of Ramadan, where the entire world seems to be caught in a web of fear, a web of anxiety, a web of hopelessness, a web wherein the future is uncertain. And here we are trying to figure out a way through this crisis. And I'm supposed to speak to youth, and I'm sure a lot of people that I see on the screen are not really youth, but they might have a heart of a youth like I have mine. I consider myself a youth. Youth, अरबी में शबाब कहते हैं, उर्दू में जवानी कहते हैं. It's kind of a defining period in life. This is a time when their personality is kind of fluid and it can be molded to fit a purpose, a certain shape. That fluidity of life, it has not yet settled down. You know, once you get into a job, a home, a marriage, an identity, it's very difficult. It kind of becomes hard. Youth is a time when we are fluid. And that's a very important time, actually. The Quran, the way it defines people, you know, as people who are in a perpetual state of motion, dynamic, not settled people. That's what a moment's character is all about. This is a time when youth are exploring their calling, their purpose, their future role in a world, in a very adult world. Their dreams, they have dreams. In a chaotic world, what do I want to do in a life? मुझे करना क्या है जिंदगी में? एक दुनिया का एक ख्वाब, you know, a dream, a world of immense possibilities, immense challenges. इस दुनिया में मुझे करना क्या है? कुछ करना है, एक challenge है, अपने आप को बनाना है. We need to make ourselves. This is a time when their adrenaline is high, full of hope, risk-taking ability, adventurous, a can-do attitude जो जवानों का होता है. Look at history, what youth have achieved. Do you remember Muhammad bin Qasim? He brought Islam to India, Sindh, all of 17 years old. Who was Hazrat Talha radiallahu ta'ala, Hazrat Zubair radiallahu ta'ala, Hazrat Usama bin Zayd radiallahu ta'ala, Hazrat Saad bin Abi Waqqas radiallahu ta'ala. इन लोगों को पढ़िए, सुनिए, सोचिए, ये लोगों ने क्या कर दिया? उखाड़ा दर खैबर किसने? वाओ, ये नौजवान, इनकी ताकत, they were go-getters. You tell them something, they were performers. They were taskmasters. Even today in the modern world, look at who started Google. Look at who started Facebook. Look at who started Apple. ये नौजवान थे, 17, 18, 20, 22 साल के लोग थे जो दुनिया को तब्दील कर 10 साल, 15 साल में, 20 साल में. God, it's a completely changed world. That's the power of youth. They come with tremendous energy that can change themselves and everything in their way. जब वो अपने आप को बदलाते हैं, अपने पूरे खानदान को, अपने पूरे दोस्तों को, सबको बदला के रख देते हैं. They break all barriers and they gang up, they pile up, they make friends very easily. All the artificial barriers that society builds, they break it up. उनको वो कोई चीज नहीं होती है, traditional barriers को वो तोड़ देते हैं. And they question, they criticize, they challenge established norms. This is an amazing thing with youth that they have. They have an angst. They want to express. उनकी परेशानी है कि हम united क्यों नहीं हैं, हम जलील क्यों हैं, हम मिस्कीन क्यों हैं, हम दुनिया में honorable क्यों नहीं? Why can't we express ourselves? Why? ये सवाल उनके छातियों के अंदर उबल रहा है, उंडल रहा है. And they want to know, they want to challenge, they want to find out.
They want to be counted in an adult world. अरे सिर्फ उन लोगों की बात है, हम कौन हैं, हमारी भी बात हो, हम भी कुछ करके जाएं. They have a courage, they have a fearlessness, and they are flag bearers and torch bearers. Of course, these are the strengths of the youth. What are the weaknesses? Yes, the youth are emotional people. They are easily disillusioned. 2 दिन काम करते हैं और कुछ नहीं होता तो छोड़ देते हैं. बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी लव स्टोरीज में उतर जाते हैं. उनको एक्शन होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए. स्लो गोइंग उनको पसंद नहीं होता है. दे वांट क्विक रिजल्ट्स, दे डोंट हैव पेशेंस. और वो दूरंदेशी भी कम होती है. और थ्रेट्स क्या है? देखिए, वी आर लिविंग एट टाइम्स व्हेन इंडिया has 65% people below perhaps the age of 35. Amazing youth, 65% below 35. And you know what? A large chunk of them are Muslim youth. ये देश की जो एनर्जी है वो मुसलमानों के पास है, और पूरी दुनिया में यही बात है. And this strength has to be harnessed, utilized. And if we don't, if these energies are not utilized, they are not converted, they also will become the adult dinosaurs that all of us have become. Dinosaurs हो गए हैं, useless हो गए हैं, frozen, barricaded, दीवारें बना लिए हैं जमातों के, पता नहीं किन किन चीजों के हमने barricades बना लिए हैं. We are unwilling to change. ऐसे dinosaurs, deceived by illusion, wasted, fizzled out, hypocritically balanced. ये दीन भी, ये दुनिया भी एकदम ऐसा बैलेंस करके रखे हैं. ये झूठ है जो दुनिया में हमने कायम करके रखा है. अगर हमने इन यूथ को सही ढंग में इस्तेमाल नहीं किया, if we don't give them direction, they will also become dinosaurs very soon. If they are improperly channeled, कहीं आप उनको गलत रास्ते पर डाल दें तो ये एनर्जी एक्सप्लोड होगी. They will explode into violence, into delinquency, into terrorism, into really doing youth. Have you seen our youth? Do you appreciate that? Guts and courage, helmetless, and vehicle all the way up like that. Woo, man, I can't do that. I don't know if you can. But that pointless adventurism, bungee jumping, racing, cave exploration, पहाड़ों पर चढ़ जाना, mountaineering, these are wasted energies, misdirected energies, self-destructive perversions आ जाते हैं. ये एनर्जी को अगर इस्तेमाल ना करें आप, तो there are any number of perversions. There is alcohol, there is drugs. Brothers and sisters, you have no idea the pervasion of drugs amongst youth in the Muslim community. On the outskirts of Bangalore in Harohalli, some of our friends run a de-addiction center. You wouldn't believe it. Their beards, their topis, and their namaz, and all their backgrounds, but they are stuck with drugs. Lies, drugs. Allah raham kare. Sexuality, perversions. मैं एक नौजवान को जानता हूं, बड़े नेक बड़े बाप का बच्चा है, और वो आज एक ऐसे परवर्टेड ग्रुप का लीडर है बेंगलोर के अंदर. अल्लाह रहम फरमाए. अगर आपने इन यूथ को चैनल नहीं किया, इफ यू डोंट चैनलाइज दीज यूथ, यू नो वेयर दे विल गो? They will get exploited by other people, by the fascists, by the castists, by the communalists, by the political forces. ये पार्टी जम गए, वो पार्टी जम गए, पता नहीं हर एक लीडर उनका इस्तेमाल कर लेता है हमारे नौजवानों का. Our youth today are disturbed. Their spiritual journeys are unfulfilled. उनकी जो दीनी जिंदगी है एक खलासी है, एक परेशानी सी है. There is no dynamism that they see once they come into the religious sphere. Except जो dynamic है वो religious pedantism है. ये हदीस authentic के ये हदीस authentic, ये सुन्नत authentic के ये सुन्नत authentic, ये बिद्दत या वो बिद्दत.
The entire dynamism of deen lies in perfecting our external, perfecting our tajweed, perfecting our tilawat, perfecting our beards, perfecting our hairstyles, perfecting our libas, perfecting our duas and our prayers, of learning the perfect dua for the iftar. Allahumma laka sumtu bika, अर्रे अब वो नहीं चलेगा दुआ, अब लेटेस्ट दुआ चलनी चाहिए और एकदम ऑथेंटिक चलनी चाहिए. This is the dynamism of the thing. Our youth are deep into this, and they're lost. They realize after a while that ये तो मेरा calling नहीं है. Where there is exclusivism, not inclusion, exclusion. Oh, you cannot be part of me because your दाढ़ी is not authentic. आपके तजवीद में ना जरा प्रॉब्लम है साहब, इस तरह आप दीनदार नहीं हो सकते. We exclude people. There is no harakat in the religious groupings that we have. There is no, everybody is waiting for a magic miracle. Inshallah, वो सूरह फतह पढ़ लेकर, वो आयत करीमा 1000 बार पढ़ने से इंशाल्लाह इलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा वो रात अल्लाह ताला तब्दील कर देंगे. इंतजार कर रहे हैं हम, मिरेकल से कुछ हो जाए, मगर मैं तो कुछ नहीं करूंगा. इंशाल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और ये तब्दीली यकीनन आएगी, जरूर आएगी, मैं कुछ नहीं करूंगा. ये यूथ का तरीका नहीं होता है. उनके लिए एक्शन चाहिए. They need something to be done. They come in and say, well, there is a lot of spirituality here, but there is a disconnect between business. मैं रिलीजियस तो बन गया, मगर बिजनेस में मैं क्या हूं? इंडस्ट्री में मेरा कोई नाम नहीं है. आई एम नॉट इनटू लॉ मेकिंग, लॉ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है. आई एम मार्जिनलाइज्ड. I have nothing to do with it. Intellectual pursuits नहीं है मुसलमानों के अंदर, नौजवानों में. Creative talent. एक हैदराबाद का नौजवान अभी मुझे कुछ वीडियोस बनाकर भेजा, ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और मुख्तलिफ सोशल इश्यूज पर. क्या टैलेंट है मुसलमानों के पास. How beautiful the talent is. Creative talent, improvisation. But there is a disconnect. Those people are not considered religious people at all. They do not have a purpose. And that is not religious enough to be part of us. Religion में आकर ये दिल है कि मानता नहीं. This is not what, for me, world is all about. There is no wholesomeness. There is no unity. Unity के तो हम बातें करते हैं, inclusiveness के तो हम बातें करते हैं, मगर in subtle ways we exclude. We do not have the process for unity. We do not have the methodology of unity. देखिए, सबको यूनाइट होना चाहिए, मगर लीडर मैं बनूंगा. सबको यूनाइट होना चाहिए, मगर नमाज इसी तरीके से पढ़ेंगे. हनफी मसलक है तो आइए, वरना हम यहाँ आपको नहीं जमाएंगे. ये तो मस्जिद अहले हदीस की है, यहाँ ऐसा ही होगा और दूसरों को कोई एंट्री नहीं है. ये तो बरेलवियों की मस्जिद है, यहाँ वही तरीका चलेगा, दूसरों के लिए मस्जिद को धो देंगे. Everybody has a wish, but do you have a structure, a pro forma where all of us can come together? If not, somehow मेरा दिल तो मानता नहीं साहब. Religiously we come across a leadership which has sold itself. There is hypocrisy all around, secret intrigues, rendezvous with the people in power, with the people in politics. मस्जिद में भी इमाम और वहां जाकर गपशप हो रहा है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में. वहां गपशप होता है दुश्मनों के साथ, सीकिंग पावर. दिन में खुतबा देंगे, रात में 12 बजे एमएलए के ऑफिस में बैठेंगे गप्पे मारते हुए, चाय पीते हुए. इलेक्शनों में हिस्सा किस तरह लेते हैं. आईएम में एक आता है तो अपने आप को बिका देते हैं. एक डोनेशन मदरसे को ले लिए क्या और फिर गाने गाने लगते हैं. मैं तो कुछ खाया नहीं साहब, मदरसे के लिए अल्लाह के वास्ते हमने लिया. People are disillusioned, sir. You can create whatever aura of authenticity, but people get disillusioned with these kind of structures that we have created. एक तो spiritual journey, दूसरी तरफ worldly journey ले लीजिए. That is also very unfulfilling.
They are confused, rebellious youth, schizophrenic youth. I'll tell you, last night a woman called me up. I will read her message that she has written to me in a moment. I would really like to read that message. Here is my message. Assalamu alaikum. I am so and so. Sir, I need your help for my son, a medical student. He has gone astray, finds Islam convoluted. I believe you can help him and answer his questions. Seeking guidance from Allah to reach somebody who can bring him back for me. Please help. Regards, distressed mother. ये है नौजवानों की हालत आज, और ये पहला कॉल नहीं है. I will show you a long list of youth who are in this shade, into drugs, into giving up Islam, into sexual perversions, into everything that you can imagine. परेशान है, rebellious हैं, जो माँ बाप करते थे वो सही नहीं समझते. How do we get out of this crisis? What do we need to do to get out of this schizophrenia? ये दीन, ये दुनिया, ना यहाँ फिटिंग हो रही है, ना यहाँ फिटिंग हो रही है. अब हम करें क्या? What are we supposed to do? Friends, in a confused world, in a directionless world, in a very foggy world, where there is no light and you don't know how to go, there are only two compasses that we have. जो कंपास होता है, जो दिखाता है नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा, it shows the direction. Today we don't have a prophet with us. There's nobody to guide us. हमारे पास अगर कोई गाइड है तो वो कुरान मजीद है. उसका स्टैंडर्ड है. जो कुरान ने कह दिया वो हक है. मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, कुरान को मजबूती से थाम लो. वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन. उसको पकड़ो. वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम. उसको पकड़ लो, उसको देख लो कुरान को, और that will set the direction of where you should go and what you should do, what is right and what is wrong. एक तो कुरान है और दूसरा सीरत है. सीरत नबी है और सीरत सहाबा है. उनके जिंदगियों को छानबीन लगाइए आप. मैं तो हदीस नहीं कहता हूं, मैं कहूंगा सीरत. उसी चीज है, एक का दूसरा इंटरचेंज है, बट आई यूज सीरत इंस्टेड ऑफ सेइंग हदीस. सीरत को मजबूत पकड़ लीजिए आप. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनालिसिस कीजिए आप, उनकी जिंदगी की. कैसे, किन हालात में उन्होंने क्या किया, कैसे अपनी जिंदगी को फोकस रखा और आगे बढ़ाते चले गए इस तहरीक को. इस कुरान और इस हदीस, ये सीरत, ये सुन्नत, इसको आपका गाइड बना लीजिए. वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा. ऐ अल्लाह, मुझे इस कुरान को मेरा इमाम बना दे, वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे. उसको मेरा नूर बना दे, the light through which I judge the world around. I find out which path to go through. कुरान को और सीरत नबी को, सीरत सहाबा को इस डायरेक्शन सेटिंग और स्टैंडर्ड सेटिंग बना लीजिए. यही वो चीज है जो हमारे नौजवान यूथ को आज डायरेक्शन पे रख सकती है. और दूसरी तरफ, once you know that direction, declare your independence. भाइयों और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, राह हक के साथियों, अपने आप को आजादी की तरफ लेकर जाए. फ्रॉम फेक, फ्रॉम टेम्पररी प्लेजर्स, फ्रॉम आइडल्स, फ्रॉम पीपल. इंसान हमारी जिंदगी को दिखाइए नहीं करेंगे. वइन अताअतुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून. अगर तुमने इन लोगों की, इन गुमराह लोगों की पैरवी की तो तुम मुशरिकों में से हो गए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह अनफाल में. एंड देयरफॉर फ्रॉम डिजायर्स, यूथ का ये प्रॉब्लम है. ख्वाहिशात, मजे, ये लूटने के लिए चाहता है दिल. इस दुनिया के धोखे से, इस दुनिया के मताए गुरूर से डिक्लेयर इंडिपेंडेंस.
and have a focus of Jannah and उखरवी कामयाबी, और आगे बढ़े आप, और फिर एक मकसद है, एक फोकस है, और वो मकसद ये हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाअका, ऐ अल्लाह मैं ना तुझे खुश करना चाहता हूं, तू मुझे बता मैं कैसे, अब क्या करने से तू खुश होगा। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, what is the best behavior that I can put on today that can satisfy my आखा, मेरे खुदा को मैं कैसे खुश कर सकता हूं। आप जानते हैं एज यूथ, वजतबाकुम, आपको अल्लाह ने एक बड़े काम के लिए चुन लिया है, इमामत के लिए चुन लिया है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, कि लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत। दिस इज हु यू आर, तुमको दुनिया की इमामत करनी थी। याद है ना, वो इज़िब्तला इब्राहिम, हमारे बाप इब्राहिम को अल्लाह ने मुख्तलिफ टेस्टों से गुजारा। वो इज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, हमारे बाप इब्राहिम हर टेस्ट में पास हुए, हर लॉकडाउन में पास हुए, हर एग्जाइल में पास हुए। क्या चैलेंजेस थे, घर छोड़ना पड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा, गांव छोड़ना पड़ा, ओहदा छोड़ना पड़ा। अरे कुछ भी हो जाए, मेरा अल्लाह राजी तो मैं भी राजी, चलो, ये हमारे पास। तो जब पास हो गए तो क्या कहा, इज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तुझे इंसान का इमामत, इंसानियत का इमाम मैं तुमको बनाया। दिस इज हु माय फादर इज, दिस इज आवर इनहेरिटेंस, दुनिया के इमाम बनाकर भेजा गया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वो मिन ज़ुर्रियती, व्हाट अबाउट माय चिल्ड्रन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा नस्ली बच्चे जो जालिम होते हैं उनसे हमारा कोई वो नहीं होता है। आले इब्राहिम, इब्राहिम के फॉलोअर्स हैं, और हम अगर उस इब्राहिमी सिफत को हमने अपनाया तो हम आले इब्राहिम बन सकते हैं, और उस इमामत के पोजीशन में हमको जाना है। और जब मुसलमान नौजवान उस इमामत की पोजीशन को छोड़कर छोटे छोटे चीजों को जब पकड़ लेता है और छोटे छोटे विक्ट्रीज को लेकर बहुत खुश हो जाता है, तो दुनिया लॉकडाउन हो जाती है, तो माइग्रेंट वर्कर्स भूखे भूखे हो जाते हैं, ट्रेनों के पटरियों पर कत्ल होते हैं, और जिम्मेदार मैं और आप होंगे इसके, बिकॉज हमने उस इमामत की जिम्मेदारी को छोड़ दिया। हमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी को छोड़ दिया। हमने वो काम छोड़ दिया जिसके लिए अल्लाह ने हमको भेजा था। ऐ नौजवान मुसलमान मुस्लिम, कभी तदब्बुर भी किया तूने, कभी सोचा तूने वो क्या गर्दून था, यू नो द स्काई, वो क्या गर्दून था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। You come from all the way up there, you've fallen onto the earth, you need to go back, rise up. सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मैं कितना कोशिश करता हूं लिरफाना, कि तुमको उठाएं, मगर तुम हो कि जमीन को पकड़कर, रोटी के दो टुकड़ों को पकड़कर चिपक के जमीन के साथ रह जाते हो। मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, चलो इमामत की तरफ, चलो फी सबीलिल्लाह की तरफ, चलो इस जिम्मेदारी के लिए। खुमू कान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू ख़व्वामीन लिल्लाह शुहदाअ बिल क़िस्त, चलो इंसाफ के लिए उठो, गरीबों की आवाज बनो, कमजोरों की आवाज बनो, हक की आवाज बनो, सच की आवाज बनो। नहीं होता हम ना वो सब। अरे मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाके करो, पूरा सेटिंग करे तो हम आते आपके साथ। You do that. We don't want. We are busy with our work. We are busy with our roza. We are busy with our iftar. We have to make our samosas. We cannot come there. ये टेंशन होता हमको। Our role in this world is the role of those children who called the emperor naked. The emperor, you're naked. Your policies are naked. You are a bottle of lies.
तू फेक है, तू झूठा है, तू जो कहता है वो सच नहीं है। कौन बोलेगा? कॉलिंग अ स्पेड इतना हम मुसलमान नहीं कर सकते हैं। और पता नहीं कैसे कैसे रिलीजियस परसूट्स में हम पड़े हुए हैं। मक्के वालों का तो दिल और गुर्दा था, जो कैरेक्टर था मक्के वालों का, जिसकी हिकमत से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद मक्के में नाजिल फरमाया। They were people of the world. They would call a spade a spade. अगर मान लिया ना किसी बात को, छोड़ते नहीं थे, एक होकर रहते थे। ऐसे लोग हम बने। When we give up these things and oppression reigns the world, ज़हर al-fasad fil barri wal bahr. जमीन में, पानियों में कितना परेशान है, एनिमल्स कितने परेशान है, झाड़ कितने परेशान है, परिंदे कितने परेशान है, माए कैसे परेशान है। या अल्लाह, अभी वो बरकादत एक ट्वीट की है, एक बाप एक माँ, दो बच्चे चलते हुए, एक 12 साल का, एक 10 साल का, एक 5 साल का बच्चा पीठ पर बाप के, एक 3 साल का बच्चा माँ के गोद में, चले हुए हैं हरियाणा मोहम्मदपुर से और जा रहे हैं बरेली यूपी। चलते चलते पैर दर्द हो रहे हैं बच्चों के। वो माँ को पूछती है तेरे को क्या चाहिए, माँ रो डालती है। क्या हमारे दिलों के अंदर रोना नहीं आता? क्या ये दीनदारी है? हम इत्मीनान से घरों में बैठे रहे? क्या मेरे और आपके आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर सकते थे? Is that how you find your prophet? जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जो अजीम कैरेक्टर थे, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, वो क्या था? जो वॉर्स हो रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारे नौजवान ये पहचाने इस चीज को, कुरान और सुन्नत को पढ़ते हुए। डिक्लेयर योर इंडिपेंडेंस फ्रॉम योर डिजायर्स, अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर विच यू हैव बीन रेज्ड। I read a verse in the beginning, kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Do you want to become the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala, or will you do pet puja? Will you help yourself, or will you help Allah subhanahu wa ta'ala in his purpose? सूरे हूद में एक आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्यों, why is it that in that lockdown world, in that world of what you may say oppression, why is it that, I'll just get you that verse in a moment and read that out. ये लीजिए, फलौला कान मिनल खुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बखियतिन यनहौना अनिल फसाद फिल अर्द। फसाद फिल अर्द को रोकने वाला और खड़ाने वाला क्यों नहीं था? No, I was busy. I was a software engineer. I was a doctor. I was a businessman. I used to sell clothes. I used to sell samosas. I used to wear clothes and I used to eat samosas. ये मेरा काम था। अल्लाह ताला कहते हैं फलौला कान मिनल खुरूनि, अरे उस गांव में कौन भी नहीं था क्या जी? यनहौना अनिल फसाद फिल अर्द इल्ला खलीलन मिन अंजैना मिन, except a few people. Why is it that there was nobody who could do this? अल्लाह ताला कहते हैं वमा कान रब्बुका लियुहलिकल खुरआ बिजुल्मि व अहलुहा मुस्लिहीन। अरे हम थोड़ी लॉकडाउन करते अगर तुम्हारे अंदर कोई इस्लाह करने वाला होता। मुस्लिहीन, ये हमारा काम है दुनिया में। ये कुरान से इन अल्फाज को ढूंढ कर निकालिए। मुस्लिहीन ये किसको अल्लाह ताला कहता है? अंसार किसको अल्लाह ताला कहता है? फी सबीलिल्लाह किसको कहता है? मालकुम, व्हाट इज द मैटर विद यू? कि यू राइज नॉट टू फाइट फॉर दोज पुअर and weak men, women and children who cry up to Allah subhanahu wa ta'ala and ask for help and say rabbana akhrijna min hazihil qaryah। किसी को तो उठा, एक सुल्तान को, एक नसीर को, एक हमारी आवाज सुनने वाले को। कौन भी नहीं, क्या सब मुक्के पड़ गए हैं क्या? Is this the youth we have? दोस्तों, there is simply too much. What is the matter? The Quran asks. Read them, get inspired.
By the way, if you want to change, you need to have knowledge. Knowledge is very, very, very important for this. And therefore, youth have to get into a path of learning. Spend an hour a day on learning the meaning of the Quran. Ponder on it, struggle with it, learn the seerah, read the poetry of Iqbal, read Sayyid Qutb, read Sayyid Maududi, read Sayyid Nursi. क्या तहरीकें इन्होंने चलाए, क्या जिंदा किया इस्लाम को इन लोगों ने। और बैठ कर कभी पढ़ते पढ़ते, कुरान को पढ़ते पढ़ते, एनालाइज द कॉजेस। कुरान मजीद कहता है वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, कि हमने इन बनी इसराइल पर मस्कनत, भिखारीपन, पॉवर्टी, we sent afflictions on them, we afflicted them with poverty, with जिल्लत, जैसा हम है ना, मैं जलील, थूक को भी देखता नहीं। तबलीगी जमात बोले तो कचरा, हम बोल देंगे वो हमारी जमात नहीं है। अरे भैया, अभी हम पुलिस कमिश्नर के पास मिलने गए थे, वहां वो लोग कह रहे थे हम अलग तबलीगी जमात, तो वो अलग तबलीगी जमात बोलता। वो थोड़ी देखेगा, ये थोड़ी बेवकूफी हम करेंगे। जलील, मिस्कीन, और इसके वजूहात कुरान मजीद ने क्लियरली बता दिया। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, क्या तुम कुरान का एक हिस्सा लेकर दूसरा हिस्से को छोड़ देंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग हम इसको कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिए, जाहिर अलग अंदर अलग, दिखाने का अलग छुपाने का अलग। अवला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, यही किया बनी इसराइल ने। अल्लाह ताला बनी इसराइल से कहता है क्या है, कैसे लोग बन गए हो, क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह ताला वो भी जानता है जो तुम दिखाते हो, वो भी जानता है जो तुम छुपाते हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग, हम कैसे लोग बन गए? So let us learn and analyze the causes. Disobedience हमारे अंदर कितना हो गया। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ। अल्लाह ताला ने ये वादा लिया था तुमसे कि तुम नमाज पढ़ोगे, माँ बाप से अच्छा सलूक करोगे, तुम मिस्किनों से अच्छा सलूक करोगे, तुम रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करोगे, खुलू लिन्नासी हुस्नन करोगे, मगर सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला खलीलन मिनकुम। कितने लोग फॉलो कर रहे, जरा बताइए। इल्ला खलीलन मिनकुम, छोड़े लोग छोड़ो, सब पलट गए, सब अपने, कोई दुबई गया, कोई सऊदी गया, कोई मेडिकल पढ़ा, कोई डॉक्टर बना, कोई इंग्लैंड में काम कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। हमने एक छोटा सा वादा आपसे लिया था और आपने नहीं किया, तो हम लिप सर्विस देने वाले बन गए। शिर्क का ये काम है कि लिप सर्विस देता है, खुदा का एक पुतला बनाता है और लिप सर्विस देता है प्रेयर का। लिप सर्विस देना ये शिर्क के काम है, और मुसलमान भी अब अल्लाह को लिप सर्विस देते हैं, बाकी जो करना दुनिया में वही करके आते हैं। मेरे नौजवान भाइयों और साथियों, we need to plan, we need to act, we need to know our priorities. See, if you have to reach a medical college, then you have to go through first standard, second standard, third standard. You cannot be bored of it. You cannot join medical college just like that. अगर दुनिया में कोई तब्दीली अगर जानना चाहते हैं तो आप लेवल 1 से स्टार्ट कीजिए, लेवल 2 को जाए, लेवल 3 को जाए, रफ्ता रफ्ता तब्दीली आती है। एंड यू शुड नो योर प्रायोरिटीज। अगर आपने दाढ़ी और टोपी से शुरू किया, आपने हाथ कहाँ बांधना और उंगली कैसे हिलाना और इफ्तार की दुआ से शुरू किया, और वजू में कान का मसा और गर्दन के मसा से शुरू किया, ये काम होने वाला नहीं। प्रायोरिटीज क्या है, दीन के जड़ें और बुनियादें क्या हैं, उस पर सोचकर आगे बढ़े। जॉइन अप, बी कॉन्फिडेंट, ब्रेक द बैरियर्स, but stay within the bounds of law. Legal boundaries होते हैं, do's and don'ts होते हैं, decent हुदूद होते हैं। हम दुनिया में
अल्लाह का काम करते करते हमारा पर्पस भी एक्सेलेंट, हमारे तरीके भी एक्सेलेंट. एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स. नहीं, मगर वो लोग करते हैं. हाउ कैन दे डू इट? बजरंग दल करता है, एबीवीपी करता है, वो फेक न्यूज. अरे छोड़ो यार, हमारा तरीका पाक, हमारा मीन्स भी पाक, हमारे एंड्स भी पाक. ये हम हैं. और यकीन जानिए, झूठ से कुछ बनता नहीं है. हक से बनता है, पाकी से बनता है, नेकी से बनता है, नरमी से बनता है. जोर से आवाज़ान डाल को ऐसे नहीं बनता है. नौजवानों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि असल ताकत, द रियल करेज इज नॉट फिजिकल, इट इज नॉट इन नंबर्स. The real courage that our youth need today is spiritual. And what is that? It is the courage to forgive people. क्या आप लोगों को माफ कर सकते हैं? क्या आपके अंदर दिल में इतनी स्पेस है कि लोगों को आप माफ कर सकते हैं? Can you overcome your anger? आफीन अनिन नास काजिमीन अल गैज़. ये कुरान की बातें हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये मैं कहीं घड़ के ले आया नहीं. कुरान ने तकवे के ताल्लुक से यही बात कहा. अगर आपको तकवा दिखाना है ना, कितनी लंबी दाढ़ी वो मापनों को, लोगों को माफ करते क्या, वो देखो. गुस्सा कितना आता है वो देखिए आप. कैन यू ओवरकम योर एंगर? दैट इज ताकत, दैट इज करेज. कैन यू ओवरकम योर ग्रीफ? उसने मुझे इंसल्ट किया था, उसने मुझे मारा था, उसने मुझे जलील किया था. ही हैड रिडिक्यूल्ड मी. कैन यू रियली फॉरगिव हिम? कैन यू ओवरलुक दैट? कितना दर्द हुआ था मुझे. May God, I suffered so much pain because of this rascal. Can you forgive him? Do you have that courage and the strength and the superiority to say to karle, to your tormentors, to your trollers? Do you have that humility in you to overlook? Do you have the courage to say, no, I will not do this? To temptation, to desire, to distraction. Are you ready for a patient, long struggle? I really would like to recommend a movie called Shawshank Redemption. It's a one hell of a movie that you want to watch, and you will realize how a slow, painful, victorious struggle is all about. It's about hardship. It's not about miracles. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ने पत्थर बांध के काम किए थे. It's about perseverance. It's about loving the enemy. It is about good behavior. I really want to read 4 verses of poetry of Iqbal. हुए एहरार मिल्लत जादा पैमा किस तजम्मुल से. एक नज़म है तुलुए इस्लाम, उसका एक ये. Iqbal says, when our youth declared their independence and came onto the scene of the world, अरे the trail that they blazed, जो दुनिया में उनकी चलन थी, तमाशाई शिगाफे दर से हैं सदियों के जिंदा. They are opening the doors in this lockdown and looking at our Muslim youngsters. Wow, they are fearless, they are courageous. Whatever came onto them, ये कितने अच्छे हैं, कितने नेक हैं, क्या लोग. But we are ending time, so we will not go too much into this. Yeah, let me make it in English. Friends, fight your ego and your greed. Join together. Don't be lone rangers into this world. Rebuild the trust that people need to put into you. Learn the tools of leadership, the tools of mashwara, the tools of being together. उसके एक अखलाक होते हैं, उसका एक धर्म होता है, कोएलिशन धर्मा जिसे बोलते हैं. Learn those things. Here, I need to give you 3 examples before I finish. And one is something called Mercy Mission that we are running here in Bangalore today. A coalition of so many NGOs across all types of people. It's amazing. One small thing I'll tell you, we have 30 kitchens across Bangalore working together in a coordinated fashion. Procurement centrally, distribution is being guided. And you know, we are doing 75,000 meals per day. MashaAllah.
The Azim Premji University is fascinated by what Muslims can do. The words independently told by a senior lawyer was, I have tears in my eyes with what you people can do. A board member at Azim Premji said, I have tears in my eyes, and he tweeted it like that. It's simply amazing what Muslim youth can do if they get together. I run a hospital. Lockdown time, paying salaries is not easy. I told my employees, it's hard. They said, sir, we will work. You can pay us what you can. And then two non-Muslim doctors came to me and said, we don't want our money this month. We will give you more money, but please pay the employees. It's okay if you don't pay us. Yeah, the kind of leadership that you can show in this world if you're really focused. We run a charity hospital. People give money amazingly without being asked. There is no other community in the world that is so charitable. If they trust you, they will do amazing things with the lockdown, without the lockdown. They will find ways to pay you. And that is the spirit of togetherness. Our youth today should understand those standards, should grab those. We need to guide them. We need to put them together and open a world of possibilities that we can dream of, a beautiful world, inshallah. And that is what we need to achieve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm open to questions. Thank you very much. If anyone has questions, they can ask. Any questions, sir? Yes, one of the brother asked, who are those alims you named? Who are they? You want me to repeat them? Yeah, their name. I spoke of Muhammad Iqbal, but unfortunately he writes only in Urdu, but he has written a book in English called Reconstruction of Muslim Thought. And then I'll give you some contemporary ulama that you need to read. You need to look at Ibrahim Kalin. He is the advisor to Erdogan in Turkey. Amazing man. You really, really need to listen to those lectures that he has given at the Ibn Khaldun University in Turkey. He is currently the advisor to the president of Turkey. And then there is another advisor to the president of Pakistan, to the prime minister of Pakistan. His name is Asad Zaman. You need to read that man. I also mentioned Sayyid Abul Ala Maududi. I also mentioned Sayyid Qutb of Egypt. And I also mentioned Sayyid Nursi, who was the leader of the Nursi movement, of all the changes that you see in Turkey today. He's the man responsible. Badiuz Zama Sayyid Nursi. That's the other name I took. Any other questions, sir? Yes. So one more question. The question is, how would you suggest those youth who are totally confused on how to contribute to the society? If you can tell me what the confusion is, that can make the answer better. Otherwise, it's a very, very general this thing. Everybody knows how to contribute to the society, but what is the confusion that they have? Is it the choices they don't have too many, or what is it? What is the confusion? Choices. देखिए, choices के एतबार से, again, like I said, the direction that it's setting is from the Quran. And that is where we need to look at what is the choice. From the seerah of the Prophet ﷺ, what choices you take. I'll tell you one simple thing in abhi maine bataya aapko. One of the greatest things that you can do is good behavior. बहुत बड़ा एहसान है आपका अगर आपने लोगों को, if you smile at people, if you speak nicely to people, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, आजीजी से बात करें, respect दीजिए इंसान को, give respect and dignity of humanity. We don't even wish to people, man. What good can we do? And then your parents, how good are you taking care of your parents? That is the good you need to do into this world.
Yesterday was supposedly Mother's Day, the Western Mother's Day. Go and ask your mother. Go and ask your father. Have you fulfilled your duties to them? Quran is very, very clear on that. I just read a verse from Surah Baqarah, what the Quran expects of you. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. Go look at the orphans. There is a slum, Muniko Kola slum. There are Rohingyas living in Bangalore. How many of you knew that? What have you done for them? Go and feed somebody there. Adopt one family from there. And you're asking me what we can do. Quran says, the hadith says you can't be a Muslim until you find that your neighbor, if you find your neighbor hungry and you eat up. जाकर देखिए बेंगलोर के नेबरहुड में क्या हो रहा है, लोगों को खाना खिलाए, सवाल क्या करना है भाई? It's so easy. I don't see what challenges they are and why the confusion is all about. There is so much good we can do. Rabbi zidni ilma. There's so much learning we can do. There's so much good behavior we can do. There's so much relationships we can mend with our friends, with our relatives, with our parents, with our spouses, with our children. There's so much that can be done with our neighbors. Let's do some good. I don't think that good needs to be defined. Thank you. So I guess it's time up. So today she would have a comment. A lot of questions coming up. All right. So inshallah, we'll try to finish it. Question. How can we give importance to both deen and dunya? Should we answer that? Yeah, we did answer, I guess. Yeah. So what's that? Should we answer that question? Yes, doctor, please go on. All right. There are two questions here. We need one voice, one direction for the youth as we have been played. That one voice and one direction is the Quran and the Seerah. You are not going to get a leader today who is going to give you that one voice, one direction. You are the leader. You decide based on what the Quran and the Sunnah says. This is what the Prophet ﷺ said. I leave these two things to you. You follow this and you'll be fine. You're not going to follow the world around. You will follow. This is the one direction that you have. There is no other direction. The direction that the Quran gives and the Seerah gives is the direction. And it is explicit. It is clear. There is no confusion in that direction that it gives. And second, how can we give importance to both deen and dunya? Friends, I think it's a big challenge. It's a big lecture on itself, and I think we need to be very, very, very clear on this. There is no such separation of the deen separately and the dunya separately. Allah Ta'ala says, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. यानी ये सूरह आल इमरान की आयत है. यानी you have two choices. You can look at the dunya or you can look at the akhirah. There are no two ways about it. There is either this or that. But Allah subhanahu wa ta'ala says, if you look at the dunya, I will give you the dunya. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you want the akhirah, I will give you both the akhirah and the best of the dunya. I will give you both. Don't worry. It's up to me. I will take care of you. Believe me. Have trust in me. I have never let you down. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala takhaf. You take care of the orphans. You take care of the miskin. You take care of the hungry. I will take care of you. This is the mantra. This is the secret. आप दुनिया के पीछे मत जाइए. अपने दीन को बनाइए. अपने अखलाक को बनाइए. Be the best. Excel in what you do. And you will see that the world will fall in its place. Allah is a raziq. He will give to you in a very, very beautiful way. And that is His promise. And we need to go by that. There is no such division between these two things. Having said that,
A halal rozi is a jihad. You have to work hard for it. You have to balance it. You have to plan it. And there are limitations for that. That's a different lecture that we can do at some other time. Yes, anything else? No, by this, we will conclude, I guess, inshallah. Okay. So, I would like to express my sincere thanks to Dr. Taha Mateen for giving an excellent coverage on how youth must live and face the world at times of such crisis. Indeed, the real strength is in overcoming anger and forgiving the people. So last but not the least, I would like to thank all the participants who paid heed and benefited out of this. Thank you. So before concluding, this summit is brought to you by the Aspire College of Excellence and the Cognate. And please like, share, and subscribe this. So وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.